Yes, sir. Yes. So here we go. So here we have entered all the details like address of the plant, where it is actually, postal code, district house number, city and all things, right? In similar way, right? आपका कोई भी plant है या company code है, company, simply what you are doing here, simply you are putting the address of that plant और company code, company, that's it. आप उसका simple address right बता रहे हो एसएपी में कि आपका ये प्लांट इस जगह पर है, इसका ये इस सिटी में है, ये इसका पोस्टल कोड है, ये स्ट्रीट हाउस नंबर, दैट्स इट. आप सिंपली उसका एड्रेस मेंशन कर रहे हो, नथिंग एल्स, इन सिंपल वर्ड्स. Here we go. Click on address button. Now go to SAP and press enter. Done. No problem. Should take IN. City code. Why it is taking like this? No, it is not copied actually. Okay, no problem. Let me see. No, I did not send. Wait, let me remove this. If I'm going to save this, IN, that's done. Let's enter. Yes. Let me show you once again. Let me press enter. So you're right. When you enter the address, na, system will pick automatically all the details from the address only. Right? We entered all the details, right? Address and all, right? So it will pick automatically from that address, these all fields. Now you can save the data. एक तो आपको ये तरीका बता दिया how you can create a company code new, right? Now there is another way to create a plant, sorry, save the data, save it, double shape. Now let me tell you another way how you can create. So now ये अभी हमने बना दिया, right? Can you see it, guys? It is here. Visible है आपको? ये रहा मेरा प्लांट, BAT0 करके मैंने प्लांट बनाया है. Can you see it? विजिबल आपके लोगों को ये सब जो मैंने प्लांट बनाया अभी BAT0 Yes, करके? Can you see it? Yes, sir. Yes, yes. Now, if I want to create a plant by another way, there is another way, right? Copy, delete, check plant. Go here, copy, delete, check plant, and here, copy, right button. Here you can go, click on this button. It will take some time. Now, if you want to create a new plant by copying the existing plant, right? That is another way. So let me tell you since starting. So let me go back. अभी हमने क्या किया था, नया प्लांट बनाया था, right? Without copying anything, correct? So now, if we want to create a plant by copying the existing one, we can create that as well. Let me show you. Normally, in standard practice, we create a new plant by copying the existing one. So let's go through that way as well. How you can create
new plant by copying existing plant. So now go here, copy, delete, check plant. जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस फॉलो क्या करते हैं हम लोग कि जो एग्जिस्टिंग डेटा है ना उसको कॉपी करके हम लोग नया डेटा क्रिएट करते हैं. ये अवॉइड करते हैं कुछ भी फ्रेश डेटा क्रिएट किया उसको अवॉइड करते हैं जस्ट बिकॉज इन एसएपी राइट वॉट एवर एक्टिविटी डन ऑलरेडी प्रोवाइड बाई एसएपी दोज हैव सम टेबल्स एट बैक एंड. सो हम ट्राई ये करते हैं कि अगर हम नया प्लांट बना रहे हैं तो भाई एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड एसएपी प्लांट उसको कॉपी करके हम नया प्लांट बनाए. क्लियर है वाला पॉइंट गाइस? दैट्स मेक सेंस. इवन यू कैन क्रिएट न्यू वन एज वेल बट मोस्टली जो प्रैक्टिस बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है हम जो एग्जिस्टिंग होता है उसको कॉपी करके हम लोग बनाते हैं. So I will show you how you can create a new plant by copying the existing plant. Go here. Give me a moment, guys. So go here. Control V, Control S. Now go here and click on this button. Copy, delete, check plant. So here you can see, right? Copy, delete, check plant. Just click on that first one. Copy, delete, check plant. Go here. Enter. Click on this. Go to SAP and go here. Copy, delete, check plant. You can go right. Here you must be able to see the button, right? Copy. So once you click on this button, copy button, right? You will get the option copy from and copy to. Copy from means from which plant you copy the data to new one. ये बटन है मेरा कॉपी वाला. I will go here. Control V. Go there once again. Click on this one. Copy. Now, system is asking you from which plant you are going to copy the data. From plant. You can go here and here in real time. See here you can see number of the plants 176 just because this is a practice server only, right? Number of people are practicing. यहाँ बहुत सारे प्लांट लोगों ने बनाए practice के लिए, right? But in real time when you go and there is fresh SAP in system, then hardly you will get a 3 to 4 or 4 to 5 plants. So by copying those standard plants only, you need to create a new plant. That one is clear? That makes sense, guys? ये सारे प्लान लोगों ने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाए. अहमद हैदराबाद प्लान, इंडिया मार्ट हैदराबाद, राइट? समबडी लाइक अस, राइट? कोई प्रैक्टिस कर रहा होगा उसने बना दिया जैसा भी हमने बनाया था ना बाटा जीरो करके, वो भी यहाँ पर होगा. ये है ना हमारा प्लान, करेक्ट? In a similar way, these all are the plant created by the different users. But in real time, when you go into a system for any real time project, here hardly you will get a 4 to 5 plant जो भी standard SAP ने provide कराए होंगे. I'm talking about a fresh SAP system when you are going for implementation. उसकी बात कर रहा हूँ. Clear है? That's make sense? Is it clear? Yes, Satyam. तो अभी यहाँ पे कोई भी प्लांट हम लेके कॉपी करके बना लेते हैं. तो लेट मी फॉर एन एग्जांपल आई एम टेकिंग दिस वन. Let me 1000. Let's take this. Up to plant. Sir, आपका why नया we need plant. to Sorry, go ahead. sir why we need to copy? So this is what I'm saying. In What is the standard difference? SAP, what happens if there is anything that is provided by standard SAP, right? So उसके पीछे कुछ और रीजन होगा, right? अगर SAP कोई स्टैंडर्ड चीज आपको प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है ना, डेफिनेटली उसके पीछे बहुत सारा बैकअप डेटा एंड टेबल्स होते हैं, ठीक है ना. सो मोस्टली हम ये बेस्ट प्रैक्टिस में करते हैं कि भाई कॉपिंग द एग्जिस्टिंग डेटा फ्रॉम SAP, वी कैन क्रिएट अ फ्रेश डेटा एज पर अवर नीड. You got it? Even you can create a fresh data as well. जैसे मैंने अभी आपको नया प्लांट बना के दिखाया, राइट? BATA0, करेक्ट? दैट इज फ्रेश प्लांट. मैंने कुछ भी कॉपी नहीं किया था, करेक्ट और नॉट? Yes.
क्या होता है जो बैकएंड सेटिंग्स होती है ना, जब आप कोई भी नई चीज बनाते हो, राइट, व्हाट एवर सेटिंग्स आर देयर फॉर एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड वन सेटिंग्स, वो सारी कॉपी होकर आप किस में आ जाती हैं, आपके नए एक्टिविटी जो भी प्लांट बना रहे हो, नया कंपनी कोड बना रहे हो, राइट, ऑल सेटिंग्स कम बाय डिफॉल्ट इन योर कंपनी कोड एंड प्लांट, जो भी आप नया बना रहे हो। यू गॉट दैट? दैट इज क्लियर? In real time, we use In real, copy as. in real time, whenever you create a new plant, you will always try to copy from the existing one. ये हम बेस्ट प्रैक्टिस में ही प्रीफर करते हैं कि नया प्लांट बनाना है तो भाई एग्जिस्टिंग द, बाई कॉपिंग द एग्जिस्टिंग वन। फॉर एग्जांपल हमारा 1,000 प्लांट एग्जांपल के लिए एग्जिस्टिंग एसएपी में, ठीक है ना, तो उसको कॉपी करके वी कैन क्रिएट अ न्यू प्लांट। क्लियर? Yes, sir. तो अभी मैं नाम दे रहा हूँ BAT1, ठीक है। कॉपी देखो फ्रॉम प्लांट, कॉपी कहां से करो, टू प्लांट। आपका नया प्लांट कौन सा है? ये प्लांट बनाना, दैट इज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एसएपी एमएम कंसल्टेंट। बट आप प्लांट वगैरह तभी कॉन्फ़िगर कर पाओगे व्हेन यू आर द पार्ट ऑफ इंप्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट। इन सपोर्ट प्रोजेक्ट हार्डली यू विल गेट अ चांस, जस्ट बिकॉज सपोर्ट प्रोजेक्ट होता है, ऑलरेडी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट होता है, वहां पर आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है टू क्रिएट अ न्यू प्लांट, जस्ट बिकॉज एसएपी ऑलरेडी रन हो रहा है वहां पर, ठीक है ना। तो आपको हार्डली विल गेट अ चांस, वो मिलेगा ही नहीं आपको नया प्लांट बनाने का, वो तब मिलेगा आपको व्हेन यू आर गोइंग टू द पार्ट ऑफ द इंप्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट। दैट्स मेक सेंस? समझ में आ रहा है व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? If Yes, you sir. are Got going to it. the part of support project now, you will never get a chance to create a plant, right? But if you're the part of any implementation team, then you will get a chance to create a plant. But you need to understand, अगर आपको plant बनाना है नया, how you need to create, right? वो आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? Yes, sir. Clear. अभिलाष भाई, let's make a sense. Yeah. Now press enter. Mayank, any doubt? Samir, No, sir. No, sir. Diya, any doubt? No, sir. No, sir. Okay. So just see, we are not doing anything special, right? This is not a rocket science. We are simply trying to define the enterprise structure of any organization कि उसके कंपनी का नेम क्या है, कंपनी कोड का नेम क्या है, राइट, उसके जो प्लांट है उनको क्या डिफाइन करना है, दैट्स इट। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, बहुत बड़ा ऐसा कोई काम नहीं कि कोडिंग वाला काम हो, यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट, आपको बहुत बड़ा माथापच्ची करनी पड़, राइट, ऐसा तो कुछ नहीं। करेक्ट, सिंपल सी चीज है कि आपको सिंपल पाथ, एसएपी एमएम में क्या है ना, बेसिकली आपको पाथ पता होना चाहिए कि आपको अगर प्लान डिफाइन करना है तो उसका पाथ कहां पर है और कैसे डिफाइन होगा, दैट्स इट। नो कोडिंग, नथिंग लॉजिक, राइट, कुछ नहीं लगाना आपको, सिंपल आपको इतना पता होना चाहिए अगर मुझे प्लान डिफाइन करना है तो वेयर आई हैव टू गो, राइट। क्लियर? अगर मुझे कंपनी कोड है तो कंपनी कोड कैसे डिफाइन करना है, कहां पर होता है कंपनी कोड, दैट्स इट। कोई कोडिंग नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, एसक्यूएल कोई डेटाबेस का यूज नहीं है, ठीक है ना, कोई प्रोग्रामिंग नहीं है, एंड इट्स very easy, let me tell you honestly, it is very easy, but you need to be consistent, you need to do the practice at home। अगर प्रैक्टिस नहीं करो तो भूल जाओगे। अभी सब इजी लग रहा हो यहाँ पर, ठीक है ना, पाथ ये रहा, ये दिख रहा है सिंपल सामने से, राइट, बट व्हेन यू प्रैक्टिस एट होम ना तो भूल जाओगे आप, करीब पाथ कहाँ पर है आपका, माउस कहीं और जा रहा होगा, कर्सर कहीं और जा रहा होगा, राइट। तो इश्यू इसलिए स्टार्टिंग में आएगा, जस्ट बिकॉज यू पीपल आर नॉट फेमिलियर विद एसएपी, बट अगर फेमिलियर हो जाओगे इट विल बी वेरी इजी, आई कैन टेल यू ऑनेस्टली, इट विल बी वेरी इजी। बट प्रैक्टिस का कोई शॉर्टकट नहीं है, यू हैव टू डू दैट, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। लेट मी टेल यू व्हाट विल बी माय अप्रोच। पहले हम बेसिक से जाएंगे, ठीक है ना, फर्स्ट बेसिक, देन वी स्टार्ट फॉर एंड यूजर साइकिल की स्टार्टिंग P2P कैसे होती है, PR PO, देन आई विल गो फॉर कॉन्फ़िगरेशन। फर्स्ट आई वांट यू नीड टू बी फैमिलियर विद द सिस्टम, विद द टी कोड, विद द प्रोसेस की पूरी साइकिल कैसे रन होनी है, PR PO GR एंड इनवॉइस, राइट। देन वी विल गो फॉर अ कॉन्फ़िगरेशन पार्ट, मतलब मास्टर कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है, बिजनेस पार्ट का कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है, ठीक है ना, पीओ कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है, रिलीज स्ट्रेटजी कैसे बनती है, प्राइसिंग प्रोसीजर कैसे आता है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई विल टेल यू, आईडॉक्स कैसे जनरेट होते हैं, राइट। तो दैट वी विल डिस्कस वन बाय वन, बट वी विल गो फ्रॉम बेसिक, देन एंड यूजर, देन वी विल गो फॉर अ कोर कॉन्फ़िगरेशन, then I will go for advanced level topics that are going to be used currently in the market। जैसे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, और शायद आप नाम नहीं सुने होंगे, शायद शायद संदीप से सुने होंगे, फ्लेक्सिबल वर्क फ्लो हो गया आपका, ठीक है ना, BRF प्लस हो गया,
LTMC हो गया, तो वो सारी चीजें दैट विल कवर लेटर, जस्ट बिकॉज दैट आर एडवांस थिंग जो भी मार्केट में चल रही है एंड पीपल आर आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम दो थिंग्स ओनली ड्यूरिंग इंटरव्यू। और अगर आपने उस पर कमांड बना ली, नो बडी कैन स्टॉप यू टू बिकम ए कंसल्टेंट। बट बिफोर बिकमिंग ए गुड कंसल्टेंट यू नीड टू बिकम ए फर्स्ट गुड एंड यूजर फर्स्ट। आपको सिस्टम चलाना आएगा तभी तो आप बन पाओ कंसल्टेंट। पहले आपको प्रोसेस समझना पड़ेगा ना कि एमएम का प्रोसेस वो कैसे रन होता है, कि पीआर के बाद क्या बनता है, पीओ बनी, फिर पीओ कैसे रिलीज हुआ, राइट, फिर कैसे जीआरएन हुई, फिर कैसे आपकी इनवॉइसिंग हुई, राइट। तो फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस, then we can go for a configure, then we can go for an advanced part. That make sense guys? समझ में आ रहा है what I'm trying to say? अभिलाष भाई, Yes, sir. मयंक, समीर, Yeah. प्रेसेंटर। Yes, sir. Yes, sir. सारे मॉड्यूल्स में सबसे इजी आपका एमएम है, थोड़ा बड़ा है बट यस इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। कंट्रोल एस, गो हियर, प्रेस एंटर। डू यू वांट टू ट्रांसपोर्ट नंबर इन? यस, क्लिक ऑन यस। ये हम क्या कर रहे हैं, एक एग्जिस्टिंग प्लांट से पूरा कॉपी करके हमने नया प्लांट बना रहे हैं, करेक्ट? दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। कंट्रोल एस, गो हियर, क्लिक ऑन यस। अब देखो टेबल्स आर कॉपीड, राइट। जो जितना डेटाबेस होगा ना उस प्लांट पर, राइट, वो सारी की सारी टेबल्स वगैरह, राइट, दैट आर गोइंग टू बी कॉपीड टू न्यू प्लांट। हो गया वो। ये पॉपअप हमेशा आएगा। इफ एनीथिंग यू आर डूइंग न्यू, राइट, इन योर सिस्टम, यू आर डूइंग एनी कॉन्फ़िगरेशन, राइट, you will always get this pop-up message को बोलते हैं ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट, and it play a very very important role in consulting. Control S, press enter। देखा हुआ आ गया, प्लांट 1000 कॉपी टू BAT1, कि जो प्लांट 1000 था कॉपी कहां पर हो गया, वो प्लांट BAT1 पर, उसकी जितनी भी सारी चीजें थी, राइट, सारी चीजें हमारी कॉपी होकर कहाँ आ गई, हमारे वाले प्लांट पर आ गई, BAT1 में आ गई। डन, कंट्रोल एस। नाउ यू कैन गो हियर, प्रेस एंटर, डन। Here you can see, right, when you go to this completed activity, here you can see your plant 1000 copy to BAT1, जो हमारा नया प्लांट है BAT1 करके वहां पर आ गया। क्लियर है? You can see it. Go here, control S. Now go here and go back. Now from here you can go back and again you can go define plant, और now you can enter the address of the plant। हमने यहाँ से define कर दिया by copying the existing one। अब आपको एड्रेस वगैरह डालना है, आप वहां डाल सकते हो, डिफाइन प्लांट से वापस डाल सकते हो। And click on define plant। So let me go here, system, go to SAP, copy delete check plant, go here, sorry, define plant। यहाँ पे जाऊंगा राइट में। तो देखो यहाँ यहीं से मैंने बनाया था अपना नया प्लांट, करेक्ट, और यहीं से मैंने अभी क्या बताया आपको, राइट, मेरे जो प्लांट है अभी मैंने क्या प्लांट बनाया है, BAT1, राइट, ये बनाया है ना BAT1, मेरा प्लांट यहाँ पर आ गया होगा जो मैंने अभी बनाया है, आ गया, करेक्ट। अब क्या करना है, सिंपल आपको इसका एड्रेस वगैरह आपको चेंज करना है। यू कैन डू, जस्ट बिकॉज ये हमने कॉपी करके बनाया है, तो जो भी सारी चीजें हमारी जो एग्जिस्टिंग प्लांट में होंगी वो सारी चीज कॉपी होकर इस प्लांट पर आ गई होंगी, करेक्ट। तो नाउ
we need to enter the details as per our requirement. जो उसका एड्रेस वगैरह, we need to put that address. correct? क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? समीर, मयंक, Yes, sir. Sir. Yes, sir. अभिलाष भाई, एनी डाउट, एनी क्वेरी, यहाँ पर कोई दिक्कत है? No, no, not yet. Go here, now double click on this. आ गया? Now simply you can go here and you can go to the address button and simply you can enter the address and it will pick automatically all the details. So let me go here. संदीप सर, कोई डाउट है यहाँ तक संदीप सर आपको? No, Satendra. All okay. Control V, enter. But yes, अगर बात करूं एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में तो configuration of plant it comes under MM responsibility. So somebody ask you what was your responsibility during enterprise structure, then you can tell them, sir, as MM consultant we configured the plant and we configured the storage location. And one more thing that I will explain you. But अभी कंपनी और कंपनी को responsibility किसकी होती है? That the responsibility of FICO consultant, plant, storage location, and there is one more term, purchasing organization, that I will tell you later after this. ठीक है? वो responsibility होती है MM consultant की. Go here, go into SAP, address. ये सारी डिटेल्स से कॉपी होकर मेरी वहां से आ रही है, जो प्लांट में रजिस्ट्रेशन से कॉपी होकर सारी डिटेल्स आ गई, एनटीबी करके, राइट, सारा डिटेल्स वहां से कॉपी होकर आया. बाटा मैन्युफैक्चर सेकंड प्लांट. Let's suppose now it is in Bangalore. Region, go here, Bangalore region. Karnataka, select Karnataka. And simple press enter, that's it. In a similar way, like we entered address previously, you can enter the address and click on enter button, that's it. Control S. Now go here, go ahead into SAP, press enter, and from here press enter, click on the save button. When you click on the save button, it will automatically, this pop-up message will come. Let me take that. सिंपली आपने एक प्लांट बनाया, ठीक है ना भाई, कॉपिंग द एग्जिस्टिंग प्लांट, और आपने क्या किया है, उस प्लांट का एड्रेस पुट किया है, दैट्स इट. Once you click on save, you will get this pop-up message. Go here, press enter, Control S. Now go here once again, press enter. Automatically it pull all the details. Here I need to put that name, but a manufacturing plant one ये pick नहीं किया, but automatically should also pick manu plant. ये आपका हो गया plant creation in SAP. That's it. So it's all about plant creation.
डन, गो बैक। हियर यू कैन सी बोथ द प्लांट, राइट। पहले हमने प्लांट क्या बनाया था, BAT जीरो करके बनाया था, फ्रेश प्लांट बनाया था। दूसरा मैंने बनाया क्या, BAT दो प्लांट, राइट, हमने ये बनाया ना, एक BAT जीरो, ये फ्रेश प्लांट बनाया था, राइट। फ्रॉम हियर ओनली न्यू एंट्रीज, सेकंड प्लांट बाय कॉपिंग द एग्जिस्टिंग प्लांट, करेक्ट। सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट अ plant in SAP, and plant creation comes under the MM consultant responsibility. अगर आप, if you are the part of any implementation project, right, then you should be aware how to create a new plant in the system in SAP. Guys, is it clear? यहाँ तक किसी को डाउट है? Any query? You can tell me right now. Anybody has any query in company code and plant so far? No, sir. No, sir. Now, after plant, we will talk about story location. Now, guys, let me tell you what is store location. Anybody has any idea? Sandeep sir, you should have idea, right? And Abhilash bhai, right? You should also aware about store location, correct? At plant. Yeah, every company is having their own store location. Might be this could be within a premises or Mhm. in some other factories or offices, could be in other unit where they place all the material which is related to the main product. Correct, correct. So basically, अगर बात करूं मैं क्या होता है store location. Let's suppose you have one plant, right? Let's suppose take example of your house, okay? आपका house है plant हो गया, ठीक है ना, एक तरीके से। उसमें मान लो 3 कमरे बने हो, राइट। एक कमरे में आपका रखा हुआ है जो प्रोडक्ट सेल करना है कंपनी को, ठीक है ना, जो आपका मैन्युफैक्चर बन के आ रहा है, जिसको सेल करना है, राइट। आपने एक स्टोर में रख दिया वो वाला प्रोडक्ट जो आपका सेल होना है, क्लियर है। एक कमरे में वो वाला प्रोडक्ट रखा हुआ है जो अभी रेडी नहीं हुआ, राइट। जस्ट वो सेमी फिनिश गुड से, मतलब पूरा बनकर रेडी नहीं हुआ है, कुछ चीजें उसमें फिनिशिंगली रह गई, क्लियर है। एक रूम में वो प्रोडक्ट रखे हुए हैं जो रॉ मटेरियल, राइट, जिसको यूज करके आपका प्रोडक्ट बनता है। यू गॉट दैट गाइस? समझ में आया है गाइस? समझ में आ रहा है? Yes. अगर आपको एक एग्जांपल दूं, Yes, ठीक है sir. ना, मैं, लेट मी गिव एग्जांपल कि आपकी कंपनी ना पनीर बनाती है, ठीक है ना, चीज बनाती है, राइट। सो नाउ लेट्स सपोज इन वन रूम जो आपका चीज बनता है, ठीक है ना, तो दूध के बाद ही कुछ प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद ही बनता है, राइट। तो आपका दूध क्या हो गया, आपका रॉ मटेरियल हो गया, ठीक है ना। तो एक कमरे में अगला एग्जाम्पल क्या रखा हुआ है, दूध रखा हुआ, मिल्क रखा हुआ, ठीक है ना। एंड अनदर रूम, जो दूध के बाद मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद जो प्रोसेस होने के बाद आपको पनीर बनता है, ठीक है ना, चीज, राइट, दैट इज सेपरेट रूम। तो मतलब एक प्लांट के अंदर ही आपको दो स्टोर लोकेशन होगी, राइट। एक में आपका मिल्क रखा हुआ है एंड इन अनदर रूम यू हैव अ चीज। मतलब एक स्टोर लोकेशन रख दिया आपने मिल्क, भाई ये रूम डिफाइन कर दिया आपने, इसमें आपका रॉ मटेरियल रखा जाएगा। दूसरे लोकेशन रख दिया आपने क्या, कि यहाँ पर मेरा क्या रखा जाएगा, फिनिश प्रोडक्ट रखा जाएगा। यू आर जस्ट गिविंग द नेम टू पुट द प्रोडक्ट एट द प्लेस। दैट इज क्लियर? दैट्स मेक सेंस? समझ में आया गाइस? एनीबॉडी एनी क्वेरी? No, sir. Then can I give one example for? यस प्लीज, हाँ, गो हेड। लाइक बाटा का हम लोग एग्जांपल ले रहे थे। ठीक है। बाटा जो है, एक सपोज लेडीज और मैन फुटवेयर बनाती है, हमने लेडीज का ले लिया। लाइक लेडीज फुटवेयर में क्या होगा, बाटा इज ऑलवेज नोन फॉर देयर लेदर फुटवेयर। करेक्ट। तो एक अपर मटेरियल होगा जिसमें लेदर लग रहा है, एक यस। लाइनिंग होती है जो कि बैक करेक्ट। साइड होती है, सपोर्ट करती है। उसमें एक सोल लगता है, एक इंसोल लगता है, और मान लो कुछ एम्बेलिशमेंट लाइक बक्कल या कुछ भी फैंसी चीजें लग। ठीक है, गॉट इट। तो लेदर का एक स्टोर अलग होगा, करेक्ट। ठीक है। यस। लेदर के लिए एक अलग स्टोर होगा, उसकी स्पेसिफिकेशन अलग, रिक्वायरमेंट्स अलग राइट। होंगी। यस। लाइनिंग अगर है वो भी उसी में ही रहती है, अगर लेदर से रिलेटेड, अगर पीयू है तो वो अलग स्टोर में जाएगी। एग्री। सोल के लिए जो होती है, सोल क्या होता है कि उसकी एक शीट होती है बड़ी, जिससे कि करेक्ट। काट काट के बनता है। बना पर तो आते हैं। सोल का अलग स्टोर होगा। करेक्ट। हील आपकी अलग स्टोर होगी। एक इंसोल लगता है जो कि आपके फुटवेयर को सपोर्ट करता है, सपोर्ट करता तो है। उसका अलग स्टोर होगा। कोई एम्बेलिशमेंट, लाइक एम्बेलिशमेंट मतलब ले लें आपने बक्कल लगा है, बक्कल बूट वगैरह बना हो है, गया। तो
कुछ भी जिप उसको लगी अट्रैक्ट बनाने है के लिए, या गॉट इट। कुछ भी एट्रैक्टिव एम्बेलिशमेंट, राइट, तो उसका स्टोर अलग होता अलग है। होगा। लाइक कोई बटन लगा होगा, टच बटन होगा, कुछ भी होगा, तो उसका एक स्टोर अलग होगा। इसलिए जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होंगी, डिपेंड्स ऑन देयर फाइनल प्रोडक्ट, स्टोर अलग अलग हो सकते हैं उसके। एग्री, यस, दिस इज व्हाट हैपेंस इन रियल प्रोजेक्ट, ओके। और आप इस तरीके से समझ सकते हो, सेम काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जिस मेटल की, राइट, वो रखा जाएगा एक प्लेस पर, एक स्टोर लोकेशन पर, राइट। और जिस दूसरे मेटल की सेम काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी ना, वो रखा जाएगा दूसरे स्टोर लोकेशन, ठीक है ना। आप समझ, रॉ मटेरियल हो गया एक तरीके से, जिसको यूज करके आपको प्रोडक्ट बनाना है। जैसे अभी एग्जांपल दिया विलास भाई ने, ठीक है ना, कि जो लेदर का सोल होता है, ठीक है ना, सोल रखा है आपका एक स्टोर लोकेशन में, ठीक है ना। दूसरा आपका जो रेडी हो गया मटेरियल, ठीक है, जो सेल होना है आपका पर्टिकुलर रेडी बनकर हो गया, जो सेल करना है मार्केट में, वो रख दिया जाएगा दूसरे स्टोर लोकेशन, लाइक दैट। दैट इज क्लियर? इसमें किसी को डाउट है कोई? एनीबडी एनी डाउट? No, sir. No, sir. Enterprise structure, definition, and here we can go material management, then we can go define S log। तो अभी मैं एसएपी में जाता हूँ, ठीक है ना। लेट मी गो हियर। अभी तो यहाँ पर हूँ, ठीक है ना। मैं तो यहाँ पर दो तरीके आपके, ठीक है ना। आप तो ये काम ये कर सकते हो, अगर आपको दूसरी स्क्रीन पर जाना है, ठीक है ना, यू कैन गो कंट्रोल एन, कंट्रोल प्रेस एन, यू विल गो टू अनदर स्क्रीन। कहे कि नहीं भाई, इधर जाना चाहिए आगे। फिर प्रेस कंट्रोल एन ना, यू विल एबल टू गो टू न्यू स्क्रीन। क्लियर है? और अगर आपको सेम स्क्रीन पर ही काम करना है, ठीक है ना, तो यू कैन गो सेम स्क्रीन, गो टू फॉरवर्ड स्लैश एन, फॉरवर्ड स्लैश एन, गो टू द होम पेज। क्लियर है? लेट्स मेक सेंस। गो टू एसपीआरओ, go to IMG, go to enter. We are talking about enterprise structure only. Go to definition part, go to material management now. Maintain storage location. What are we talking about? I was talking about storage location, कि मुझे स्टोर लोकेशन डिफाइन करनी है। हाउ कैन आई डू दैट? एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, डेफिनेशन, और ये मटेरियल मैनेजमेंट। और सिंपल, आप देखो इसमें सिंपल इतना सा काम है, आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज किसके अंदर है। अगर आपको स्टोर लोकेशन है, दैट कम्स अंडर एमएम। प्लांट है, that comes under logistic general. Got it? Company and company code that comes under financial account. That's it. Go here, Control V, click on maintain store location. So you can go here in SAP, go here. Now, system is asking you for which plant you want to maintain store location. System आपसे पूछ रहा है आपको किस plant के लिए store location maintain करनी है। तो here you need to enter your plant. Clear है? मेरा प्लांट क्या था अभी? दो बनाए थे मैंने, BAT0 एंड BAT1। आई कैन एंटर एनी प्लांट, enter your plant and simply press enter. Guys, anybody any doubt what we are doing here? No doubt, sir. कौन सा लगे? ठीक है, I will place that later. Alt tab, go here, go to SAP, press enter. Now if there is no any entry, right, हमारे पास यहाँ पर कोई भी स्टोर लोकेशन नहीं दिख रही, करेक्ट? What we can do here, we can go for new entries। दिख रहा है आपको ऊपर न्यू एंट्रीज? देखो न्यू एंट्रीज है, देखो। We can go for new entries and we can define a store location. Now go here in SAP and go to entries,
लोकेशन ऐसे डाल सकते हैं हम लोग 0001 डाल दिया आपने 0002 इसको देता हूं मैं बाटा रॉ मटेरियल के लिए दूसरा बाटा फाइनल प्रोडक्ट कुछ नाम दे दिया दैट्स इट अब इस तरीके की एक्टिविटी अगर इफ यू आर द पार्ट ऑफ एनी सपोर्ट प्रोजेक्ट यू विल गेट दिस काइंड ऑफ टिकट्स लाइक क्लाइंट आपको बाय रिक्वायरमेंट भेजेगा वी नीड टू क्रिएट अ न्यू स्टोर लोकेशन फॉर दिस प्लांट प्लीज क्रिएट इट इन एसएपी so you will get this kind of requirement in support project what I'm saying whenever you're the part of support project when previously I was working in Infosys for 3 years so I got a lot of requests like this we need to create a new store location at this plant तो इस टाइप की रिक्वायरमेंट आपके पास आ जाएंगी सपोर्ट प्रोजेक्ट में क्लियर है गाइस आपको पता होना चाहिए वेयर टू डिफाइन अ न्यू स्टोर लोकेशन आपको पता होना चाहिए स्टोर का पाथ क्या आप कहां पर है और कैसे डिफाइन करते हैं दैट्स इट नथिंग एल्स संदीप सर कोई इशू है यहाँ तो कोई डाउट है आपको और एनीबडी No, Sachin. All ठीक okay. है Sure. These kind of tickets you will get in support project if you are the part of any support project we call it as AMS project तो वहां पर इस टाइप की रिक्वायरमेंट आती है कि वी नीड टू क्रिएट अ न्यू स्टोर लोकेशन फॉर एनी एग्जिस्टिंग प्लांट इस टाइप की रिक्वायरमेंट आपको हमेशा मिलेंगी सपोर्ट प्रोजेक्ट्स में कि उनको बोलते हैं टिकट्स रियल टाइम में उनको टिकट्स बोलते हैं एंड डिटेल्स विल बी सेंड बाय क्लाइंट ओनली कि उसका नाम ये रखना है दैट्स इट प्रेस एंटर data was saved done this is how you can define the store location clear है guys इतना सा है simple so till now we have done company code then we have done plant and then we have done store location guys यहाँ पे कोई डाउट है कोई क्वेरी है No, anybody any sir. doubt any query जो कुछ समझ में नहीं आया हो you can ask me once again I can repeat that just because No, इसके बाद sir. मैं केवल 10-15 मिनट का सेशन और लूंगा and I will complete one more topic purchasing organization that's it fair enough अगर किसी कोई डाउट है क्वेरी है वी कैन डिस्कस ये कुछ समझ में ना आया हो ओके देन लेट्स कनेक्ट फॉर 10 मोर मिनट्स ना ये सेशन खत्म होने वाला है 40 मिनट्स का विल कनेक्ट फॉर 10 मोर मिनट्स फेयर इनफ जस्ट बिकॉज आफ्टर दिस वी विल कनेक्ट ऑन नेक्स्ट सैटरडे ना ड्यूरिंग 5 days if you are getting any issue guys you can reach out to me I will be there to help you कोई भी इशू आ रहा है कंपनी में कंपनी कोड में प्लांट में जस्ट सेंड मी स्क्रीनशॉट ओवर व्हाट्सएप फर्स्ट ट्राई टू डिस्कस विद इन अ ग्रुप आप खुद से डिस्कस करना एक दूसरे से राइट अगर फिर सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है देन रीच आउट टू मी ये सेशन खत्म हो जाएगा 15-20 सेकंड्स में देन विल कनेक्ट फॉर 10 मोर मिनट्स इट विल नॉट टेक मच टाइम